Hello everybody, welcome to Amazingly Enough. My name's Michelle and आज का वीडियो IELTS एग्ज़ाम पे होगा. तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको ये IELTS एग्ज़ाम देना पड़ता है to be able to come to Canada, and I would not be discussing all the 4 IELTS parts right now. I would be talking about the IELTS writing section, and that too the writing part A section of the writing part. So also the coming videos would all be about IELTS, so please keep watching. So I would give you my tips on how to give this test, as some tips that helped me. I'm just going to share that with you guys, and I hope they help you too. So tip number 1 is read the question and follow the word count. So when you read the question, आपको question में दिया जाता है सारा information question में होता है, वो describe कर देता है कि आपके report writing में वो चाहते क्या आपसे, और ये भी लिखा होता है कि word count क्या होता है. So my suggestion is, tip number 1 for me is, please follow your word count, please read your question very well. Now my second tip is analyze, be objective, no emotions involved. So what I mean by this is, आपको रिपोर्ट राइटिंग में एक डायग्राम दिया जाता है या एक ग्राफ दिया जाता है, तो आपको यानी तो कोई चार्ट दिया जाता है, तो आपको ये एनालाइज करके आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है. तो यहाँ पे आपको अपनी इमोशंस नहीं इन्वॉल्व करने होते हैं. जैसे मान लो अगर आप पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि सो मच पॉपुलेशन इज़ बैड, ये आप नहीं लिख सकते. अगर द ग्राफ सेज population has increased from 2005 to 2006, आप सिर्फ ये लिखेंगे कि population has increased from 2005 to 2006 अगर ग्राफ में ऐसा दिख रहा है कि there is an increase, but ये नहीं लिखेंगे कि this looks like it's bad because there is lots of increase in population. आप ये नहीं लिख सकते. So that is my suggestion to you. The tip number 2 is to not involve your emotions, do not put your opinions, do not use the word I feel, I think. रिपोर्ट राइटिंग में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. इट्स अबाउट देम टेस्टिंग योर एनालाइजिंग स्किल्स, हाउ यू आर एबल टू एनालाइज थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, नॉट इमोशनली. टिप नंबर 3 फॉर यू गाइज is to make a generic introduction. So आपको पता है कि you saw the question, आपने एनालाइज कर लिया अपने डायग्राम को, now you want to put it down in words. तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहला जो होगा तो वो इंट्रोडक्शन ही होगा. तो मेरा टिप फॉर इंट्रोडक्शन इज मेक अ जेनेरिक इंट्रोडक्शन. सो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यू विल राइट अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स. एटलीस्ट आप 3-4 तो रिपोर्ट प्रैक्टिस कर ही लेंगे. तो जब आप 3-4 रिपोर्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो आपको एक पता चल जाएगा कि इंट्रो स्टार्ट कैसे करना है. जैसे स्टार्टिंग प्रॉब्लम आपको नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम इज ऑल अबाउट यू मेंटेनिंग योर टाइम. सो यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट कि यार ये स्टार्ट कैसे करूँ. तो माय एडवाइस टू यू इज मेक अ जेनेरिक इंट्रोडक्शन, बिकॉज हमें पता ही है कि कोई चार्ट आना है या कोई डायग्राम आना है. सो माय एडवाइस वुड बी दैट यू मेक अ जेनेरिक स्टेटमेंट लाइक दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर. या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस चार्ट शोज द ग्रोथ ऑफ इन पॉपुलेशन फ्रॉम, instead of shows you can write represents or you can write illustrates. This is how you can make a generic line. And like I said, point number 1, when you read the question, आप वो इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में. सो हैविंग 2 or 3 इंट्रोडक्शन लाइन्स इन योर माइंड is always good, as it is very easy for you to write the exam. I did that. I made 2 to 3 statements जो मेरे को पता था कि ये यूज होएगा. तो अगर if it says this graph, now if the graph is a bar graph, you write this bar graph shows के वहाँ आप लिख सकते हैं represents, demonstrates. and अगर वो population हुआ तो population, अगर sales हुआ तो sales, and then timing from year this to year this, because ग्राफ में हर चीज़ डिटेल में होता है. टाइम पीरियड तो होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप टाइम पीरियड मेंशन कर लेना. दैट इज माय थर्ड टिप टू यू. माय फोर्थ टिप इज अबाउट द बॉडी. नाउ the way the tip in the body is all about grammar. Tip 4 is all about grammar. यहाँ पे the tips in grammar is
you are going to be tested on your vocabulary. तो आपको ज़्यादा तरह के words use करने पड़ेंगे, और आपको repetition नहीं करना है. So this part and your grammar part, when they are checking, you don't want to repeat words. So we know that graph is all about, it goes up, it goes down, there's a lot of trends and patterns that's involved. तो आप बार बार ये नहीं लिख सकते कि population has increased from 2004 to 2005, then population has decreased from 2005 to 2006. अगर आप सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे तो वो आप, द पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर, वो आपको वो नहीं कर पाएगा ना, एग्जामिन नहीं कर पाएगा आपके वोकैबुलरी स्किल्स को. तो आपने हर बारी वर्ड्स चेंज करने हैं. सो यू फर्स्ट टाइम यू राइट इंक्रीज, नेक्स्ट टाइम यू राइट आई सी दैट दी there is a rise in the pattern, there's a rise in the sales, yani to next time you use another word for decrease, the growth has dropped, okay, instead of decrease. Yeah, this is how. So my tip to you is make sure you use a lot of vocabulary and there is no repetition. Another thing that I did is जब मैं practice करती थी तो मैंने cheating करना, I would always have my phone with me, and जैसे मैं लिखती थी I would like यार ये word तो बड़ा simple है, तो मैंने फ़ोन उठा लेना and I would look and I would like okay yes synonym for this word, and then I would write. For example, this is she is a very good person. Good बहुत simple word है, मैं लिखती she is a lovely person. तो अभी एग्जामिनर को पता है कि आपको गुड भी पता है, आपको लवली भी पता है, या नहीं तो दिस इज बैड फॉर यू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैड यू से दिस इज हार्मफुल फॉर यू. तो अब एग्जामिनर को पता है कि यू नो द वर्ड हार्मफुल. सो अगर आप बार बार वही चीज़ रिपीट करेंगे, बिकॉज लाइक आई सेड ये ग्राफ है, बार बार ऊपर नीचे, तो बार बार अगर आप सेम वर्ड्स यूज करेंगे इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. Another tip in the grammar part itself, use adjectives. अब मैंने लिखा है that there has been an increase in sales. Now you're gonna write there has been a dramatic increase in sales. Like if there's a huge increase in sales, you would say there has been a dramatic increase in sales. There has been a significant increase in sales. या नहीं तो अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, you can say there has been a negligible increase in sales. So you see, using adjectives, it helps give you word count, helps show the examiner that you know a lot of words, you know how to make a lot of sentences. So ये आपके लिए it will फायदा करेगा. Then my last tip to you is, this tip is related to the second tip. मैंने आपको बोला था there is no need of emotions. अगर इमोशंस नहीं है तो मतलब आपके ओपिनियंस मैटर ही नहीं करते, और अगर आपके ओपिनियंस मैटर ही नहीं करते तो कंक्लूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है. सो बिकॉज कंक्लूजन इज टू कंक्लूड you think that the growth of population is bad for your country, but you can't write that because it's a report writing. So in a report you do not need a conclusion, it's all about an intro, and what you see you put it into words. That's it. These are my tips for you. I hope it's helpful, and I'll see you in the coming videos. Until then, happy living guys. Please like, share and subscribe this video.